and strategy and most importantly, the syllabus and strategy to crack this examination. So let us start. If we talk about what is AIB, I hope all of the prospective AIB students know that what is AIB. However, I will be just telling you just the basic. So it is a certification examination which is conducted by the Bar Council of India, and it has been started in the year 2010. So usually before 2010, there was no such standard to practice law in India, and there was no such examination. However, it was realized that to maintain some decorum and a standard of legal practice in India, some set of knowledge and skill is required from the future advocates, and thus this examination was brought in. So it is conducted twice a year for all the law graduates who are willing to practice or profession as an advocate in the courts of India. However, if we check the recent amendment which was introduced in the September 2024, we find that there have been two new categories which have been introduced in this examination, and they have been made eligible to give the AIB examination. And these categories are: number one, if you are in the final semester of your law degree. For example, if you are a 5-year BA LLB integrated course student and you are in your 10th semester and AIB notification is out, then you are eligible to fill the form. Secondly, if you are a law graduate, that means you have not yet got your degree. However, you have passed your you have given your examination. Then you can also fill this form, and you can appear for this examination without even getting enrolled to the State Bar Council. So this is the third category, that before getting the enrollment in the State Bar Council, you will be able to appear for AIB examination. I'll tell about this in detail further. However, this was just the short introduction about it. Next, if we talk about what is importance of AIB examination, so I have taken this phrase from the BCI rules itself, and it was said that the sole intention of AIB examination was to improve the standard of legal profession. So as I told you before, there was no examination as such at the All India level before 2010, and the kind of the lot which was entering into the profession was not so skillful and knowledgeable, and thus they used to suffer some just a second. Yes, so sorry for the disturbance. So the lot which we used to have was not equipped with the knowledge and skills, and thus many failed in this profession as a lawyer. Thus, the AIB examination wants that all the law graduates who are trying to enter into this profession must possess some kind of skill. They should have some knowledge before they enter into this profession. And therefore, this examination is designed pursuing the same intention, and it is designed in such a way that it tests not your mug-up memory, but it tests your analytical skills. It tests your how you approach your bare act, how you apply your mind, and how you quickly in time arrive at your answers. So without further delay, let us understand the examination pattern. Now, if we talk about the pattern of examination, it has 100 questions, right? And it is of 1 marks each. There is no negative marking in AIB examination. And then if we talk about whether the questions are objective or of subjective nature, then it is of objective nature. You will have 100 questions from different parts of the different parts forming from the questions forming from this different subjects, and all of them will have some designated marks. You will have to attempt find one answer from the 4 options. And then if we talk about the syllabus of it, then I have mentioned the syllabus here. You can access it through the official website, which I have mentioned the link here. It is the official website of Bar Council of India. So all the examination related queries and details are on this website. You will be applying through this website only, and whatever result will be declared, it will be on this website. So it is BCI which supervises
and guides and also conducts this examination. So let us see the syllabus. It contains number one, the constitutional law. So 10 marks questions are from the constitutional law. So you will see from the syllabus as to what are the portions we are required to focus more for clearing this examination, and what are the portions we are required to just go through so that we can get the required amount of answers correctly. However, if we see that there are some, for example, these acts are there which contains just 2 marks question. However, it is not so that they are not important. Next, we have Indian Penal Code and BSA, which is of 8 marks. So since AIB 19, we have the introduction of the new criminal law. So they are also being asked in this AIB question paper. If we talk about the next, it is CRPC accompanied with, it should be BNSS and IPC with BNS. Wait. Yes, sorry. So the sequence is wrong. IPC accompanied with BNS, CRPC accompanied with BNSS, and Evidence Act with the BSA. And it will contain 10 marks for CRPC and BNSS, 8 marks for evidence and BSA, and IPC, it will be 8 marks, right? Now, if we talk about the next, so these and CPC for 10 marks. So if we see Constitution, CPC, CRPC, IPC, and evidence, these are 5 very important subjects which forms almost 50 marks of the 50% of the portion of the AIB examination. However, there are several other acts because there are total 19 heads which are mentioned under the syllabus, official syllabus provided by BCI. And we have alternative dispute redressal mechanism, including the Arbitration Act. Then we have family law, including Hindu and Muslim laws, and also the Special Marriage Act. Then we have public interest litigation, administrative law, most importantly, professional ethics and cases of professional misconduct. Then we have company law, environmental law, and cyber laws. So we know that the syllabus of company law, environmental law, cyber law, these are very wide. They have several acts. In cyber law, we have the IT Act. However, in environmental law, we have number of acts, including EP Act, Water Act, Air Act, Biodiversity Act, etc. In company law also, it is a very lengthy act, the Companies Act of... okay, I'll answer all the questions afterwards. However, let me just see. Excuse me, ma'am. I apologize for the interruption, but you are not audible. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sorry for all the disturbances. Okay, so as I was saying, we have in our syllabus the labor laws and industrial laws, where you will be asked questions from the new labor code, which was enacted in the year 2020. And under industrial laws, we have Industrial Disputes Act of 1947. Then we have Law of Tort, Motor Vehicle Accidents Act, and Consumer Protection Act. From this portion, you will get questions of 5 marks. Mostly questions are from the Law of Tort, and then there are 1 or 2 questions from MV Act, and sometimes it is from the Consumer Protection Act. So it is not fixed that you will get 1 question from Consumer Protection Act or MV Act. You may get MV Act or Consumer Protection Act, whatever may be the case in a particular examination. Then we have the Law of Contract, Specific Relief, and NI Act. NI Act is the Negotiable Instrument Act. From this portion, you will get questions of 8 marks. Then we have Taxation Law, and here you will get 4 marks question. Then Land Acquisition Act and IPR. Now, this was the detailed syllabus of AIB examination, but we are more concerned with as to how to approach the examination.
because we all must have at least gone through the syllabus. But I think all of you must be amazed to see the amount of portion which is being asked, and you will be also having this fear as to how to approach this examination and then how to crack it within the limited time, and how to memorize all the things, right? Now, for this, it is important that first of all you should formulate the strategy. Now, I would suggest before you start preparing for your AIB examination, just have all your bare acts, which all the subjects which are there in the syllabus. Just have the bare act of all the important all the acts. Now, afterwards, you will be left with those portions from where theoretical and definitions are asked, theoretical parts are asked. And then there are some subjects like the administrative law and the law of torts where you don't have a bare act. However, in those parts also, you have to formulate a strategy as to how to memorize those things. Next, if we talk about the tip from my side, it would be study smart and not hard. Why I'm saying so is there are almost 19 subjects which have been mentioned in this particular syllabus by BCI. Now, if you see, you have just either passed your examination, your 5-year law degree or 3-year law degree, or you will be in your last semester. You have to also prepare for your semester examinations and all the things which are going on in college. And then if you have already passed or if you have already graduated, then you will be also having some other things to do. For example, you must be practicing under some advocate and all these things. So there is a very um, less chance that you will dedicate 8 to 10 hours for this examination. Moreover, because of the fact that this examination is an open book examination. Now, since it is an open book examination, you are not required to memorize everything, right? So you should know what to memorize and what not to, what you should just go through it, and what you have to have it so good in your memory that it should be on your fingertip. And then, most importantly, how to manage your time when you are in the examination hall. So even though it is an open book examination, the most important thing which everyone forget is as how to prepare for managing your time. You will have all your 19, 20 or more than that, the bare access, right? However, you will have just a limited amount of hours and that will be just 3 hours. Now you have to, if you are not prepared for your examination, if you don't have a strategy, you will be just juggling through the pages of your bare act. However, you will not be able to find the correct answer. Moreover, because of the fact that the questions are bare acts with commons or without commons. Okay, I'll come to it next. I'll tell you what type of bare acts are necessary. So I was saying, yes. So if you are not having a proper strategy as to how to navigate your bare acts, how to find your answers, you will not be able to do it on time. Secondly, some questions or nowadays since past 2 or 3 AIBs, most of the questions from these barracks are application based questions or factual questions. So they will not ask you a direct section as to where murder has been defined under the BNS or the IPC. They will not ask you where FIR has been mentioned in the BNSS, but they will ask you that this is a particular situation. Say, for example, they will give you a case situation. So there is this person who has been found murdered on the date of this, and then these all are the facts of the case. What should be the provision as per BNSS, right? So if it is a question relating to investigation, you must be knowing the portion where you will find the provisions relating to investigation in BNSS. And for this, you should have to go through your BRF previously, right? So these are some points which are needed to be considered. Next, if we talk about the resources which we have to use for preparation of this examination, I would always suggest just that do not go through multiple resources. Do not go through a lot of piled up resources, number of guidebooks, and then all the crash courses and all a different type of YouTube channels.
So it will just increase the amount of preparation, increase the amount of effort you would put in, but it will decrease the efforts you will have, decrease the result which you will get from all this effort, right? So I would suggest just go choose one or two resources. For example, choose one PYQ platform, or just choose one crash course where you will find all the material in a very detailed way. Now, since we are talking about the crash course, this platform, Legal Vidya, with Legal Vidya, we will be just launching a new crash course. It may be launched today, I think. So a link will be shared, and this course will start in July. So you will get all the AIB related preparation strategy, everything, and it will be a crash course dealing with all the important topics from all the important subjects. So if you wish, you can also go and check this particular crash course also. Next, I would suggest that to focus on revision. If we are considered with all the things we are putting into, all the resources, we are just reading everything. But if you are not revising all the concepts which you have already gathered, or you are not revising the things which you have already prepared, you are bound to forget it when the examination is near. So I would suggest just that prepare a timetable, prepare a chart, a timeline basically, that if you are starting a preparation before 2 months of AIB, then you have to prepare a timeline that for in 1 week you will be finishing your constitutional part. Then in the next week you will be doing with your criminal laws. However, when 1 week of constitution is over, you are not required to just forget everything about constitution. You have to keep revising all the things which you have already studied. So revision is the key, right resources is the key, and smart study is the key. Now, if we again talk about what should be the strategy as per me to crack this examination. So number one, I would say that just first of all, get the right resources, whatever you are having. Next, go through your syllabus once, twice, thrice, so that it should be clear in your mind that which portion you have to focus upon more. Next, once you have gone through your syllabus, uh, through your resources, identify the important topics which you think will be asked in your AIB examination. For this, you can start practicing your PYQs and go through just, I would say, 5-year question paper. Go through the question paper and see what are the portions which are being asked repeatedly in the examination, which are being focused more upon. For example, if you take this constitutional law paper, then you will find that from the constitution, there are questions from writs, there are questions from the fundamental rights, there are questions from Article 12 and 13 and emergency provisions. So you will find that there are questions from all these parts, and therefore, where can we find 5-year question paper? Okay. So question papers are usually very, they will be found on the random websites. They are spread. However, you will find all the question papers or the past 5-year question papers. You will find all the resources and all the important topics in the course which I said. It will be launched by the Legal Vidya, and it will be conducted in the month of July. So you will get question papers, you will get practice of PYQs, you will get important topics and important case laws. All the PDFs will be provided to you. So you can consider of getting that course. Okay, let me first answer all your questions. Because okay, so we are left with a lot of time, so please be patient and I'll answer all your questions one by one. Uh, just bear with some tips which I am giving to you. Uh, so, the approach. So, I was on resources. So, once you have already outlined the important topics from your resources, give it the time, whatever you think is necessary to memorize some important topics. For example,
under Constitution or under IPC, you will be required to deal with all the theories of, say, criminal liability. Then you should be knowing all the important landmark cases sometimes, and also you have to go through all the important maxims which it have. So just outline all those maxims, all those theories, and all those important definitions. Go through it, revise it, and you will be able to remember it. Next, for the sections part, you are not required to go through all the sections, all the provisions, and memorize it, because time will be short. However, what you are required to do is go through your bare act, whatever subject you are thinking. Say, for example, it is BNS. So go through the bare act of BNS. First of all, go through the content part. You will be able to know that what are the provisions under which chapters, how many sections are there, and what is the scheme of chapterization which is there, right? And in this manner, you will be able to do your bare act part. And whenever you will be asked question in your examination, you will just go, say, for example, if there is a question relating to offenses related to property, you will open the chapter which is dealing with offenses relating to property in BNS, and you will find the important section, right? Next, revise it once, twice, thrice in a week. And most importantly, practice the PYQs. Or you can also practice some sample questions. However, there are several guidebooks which provide a lot of sample questions. They say that these are very important questions. However, they are of not much use. So I would just say just stick to the PYQs and go through your resources. Uh, Now let me answer all your questions, but before that, let me just clear one doubt. Okay. So AIBE is an open book examination. Number two, you are not required to get into any merit. In AIBE, no merit list is prepared at all India level. All you are required to do is that you have to secure 45% of marks of the total marks. That means you have to secure 45 questions to just qualify your AIB if you are from general or OBC category. If you are from SC/ST category student, then you are required to secure 40% marks, and that will be enough to clear AIB examination. Okay. No merit list is prepared, I repeat. So you are not considered with, you should not consider this fact that I have to secure this much of marks, otherwise I will fail the examination. So it is one of the easiest examination if you compare it with all the other examinations. However, without right strategy, you will not be able to crack even the easiest examination. So as per the latest data, which was asked by one MP, yes, it was asked by an MP through an RTI, and the record was around 22% of the applicants, the candidates of AIB examination, they failed AIB examination. So even though it is an open book examination, even though it is a very easiest examination, however, you will not be able to crack it without the right strategy. Next important thing is, before September 2024, it was only the law graduates who are registered with the State Bar Council who eligible for AIB examination. However, now the eligibility criteria for AIB examination has been changed, and it includes all those candidates who does not have any state bar registration. So even though if you are in process of getting a state bar registration, or if you have not yet applied but you are a law graduate, you can appear for a AIB examination. Number two, if you are a law graduate but you have not got your law degree, then also you can appear in the AIB examination. And number three, if you are not a graduate yet but you are in your final semester, final year, then you can always appear for AIB examination. Final year is applicable only for those students who are into their 3-year law degree and they have no semester system. However, mostly I think there are semester system in the LLB or BLB courses. So you have to be in your final semester to appear in the AIB examination. Now this is all from my side, and you can now ask your questions. So However, excuse me, ma'am. yes, Karan. Yes, yes, ma'am. You can continue.
So I was saying that all the participants should just raise your hands, and I'll call you one by one. So yes, ma'am. Before we open the floor for questions from the participants, ma'am, I would like to ask a couple of quick questions, which I believe will be very helpful for many of us here who are preparing for the AIB. So shall we Okay, proceed, sure, ma'am? sure. So मैम फर्स्ट इज एआईबी की प्रिपरेशन करते वक्त कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ओके, तो ये शायद मैंने पहले आंसर कर दिया है, बट इफ वी सी द सिलेबस नाउ, एवरी एग्जाम शुड बी अप्रोच टू देयर सिलेबस। तो अगर हम इनका सिलेबस देखें, देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी एंड बीएनएस, सीआरपीसी एंड बीएनएसएस, एंड एविडेंस एंड बीएसए, accompanied with the code of civil procedure. If we are done with all these 5 important subjects, तो इससे हमारा ऑलमोस्ट 45% 45+ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। Yes. However, there are sometimes chances कि हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं सही सही। देन अगर हम फैमिली लॉ, पीआईएल, प्रोफेशनल एथिक्स और ये 5 पोर्शंस कवर कर लेते हैं, तो हमारा एआईबी का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्लियर हो जाता है, और इससे हम एआईबी को इजीली क्लियर कर सकते हैं। यस मैम। सो मैम लास्ट क्वेश्चन, क्या एआईबी के लिए सब्जेक्ट वाइज पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव होता है या डायरेक्ट मॉक टेस्ट सॉल्व करना, और दोनों को बैलेंस कैसे किया जा सकता है एफिशिएंटली? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली एज अ स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, या तो हम पूरा पढ़ते जाते हैं और फिर हम मार्क्स नहीं देते हैं, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन पढ़े, मार्क्स ही दे देते हैं, तो कुछ तो क्वेश्चन फंस जाएंगे। नो, आई वुड सजेस्ट कि इन दोनों के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश करना इज द राइट की। क्योंकि सिर्फ हम सिलेबस के थ्रू ही पढ़ते रहते हैं और सारे सब्जेक्ट्स हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें आइडिया नहीं मिलेगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम कितने क्वेश्चंस करने में एबल है थ्रू व्हाट वी आर स्टडिंग। हाउएवर, अगर हम ऐसा करें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, हमने आईपीसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, सीआरपीसी के पढ़े, और फिर हमने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ मार्क्स दे दिया सब्जेक्ट वाइज, तो हमें भी एक आइडिया मिल जाएगा और हमने जो पढ़ा है दैट वुड बी रिवाइज इन द मार्क्स। तो मेरा सजेशन यही होगा कि फॉर एआईबी, गो ऑल थ्रू योर सिलेबस सब्जेक्ट वाइज एंड देन अपियर फॉर द मार्क्स और सॉल्व द क्वेश्चंस। यस मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। वी कैन प्रोसीड फॉर ओपन फ्लोर फॉर क्वेश्चन। Okay, so the first hand raise which I am seeing from GN कौन है? You can unmute yourself and ask your question. Hello. Yes, Yes, ma'am. Good evening. good evening. Uh, yeah, this is Neha. And my query is that since I am also a company secretary student at professional level, so I wanted to know that once we clear the AIB exam and avail the COP, and in case I have to surrender it, say for instance, I need to practice the company secretary and I'm availing that COP. So in future, if I need to regain the advocacy COP, do I again have to reappear this AIB exam? Yes, नेहा, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। तो जो सरेंडर का प्रोसेस होता है वो सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज एज पर द एडवोकेट्स एक्ट एंड बीसीआई रूल, कोई भी एडवोकेट तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता इफ दे आर हैविंग एनी सैलरीड प्रोफेशन एल्सवेयर। सो यू कैन नॉट साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस विद अ जॉब। तो आपने जितने टाइम के लिए आपको जॉब कैरी ऑन करना है, यू कैन सरेंडर योर लाइसेंस, एंड आफ्टरवर्ड्स जब भी आपका मन हो, यू कैन ऑलवेज रिवाइव इट बैक। ये आपके स्टेट बार के थ्रू हो जाता है। Okay, but in that case, will I have to undergo this AIB exam once again? No, you are not required to give your AIB examination. Okay, right, sure. Thank you. Welcome. हेलो Yes. हेलो मैम, दिस इज श्रुतकीर्ति। मैम, एनरोलमेंट करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? अगर इसके लिए टाइम है, सपोज एआईबी एग्जाम देने के लिए टाइम है या रिजल्ट आने तक के लिए टाइम है और एनरोलमेंट हो गया है, तो देन कैन वी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली Okay. फॉर तो दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम?
when you are registered with your state bar council, you will be getting a temporary license which will be valid for 2 years until you clear your AIB examination. In that period आप Correct. अपने state jurisdiction में practice कर सकते हैं. Okay, but independently I can practice, no? Because from somewhere I got to know कि नहीं आपको किसी like advocate के साथ ही practice करना पड़ेगा, independent नहीं, because it might possible I am planning to giving AIB for the next year. So for that particular provisional period I was asking. So independently I can practice, right? Yes, you can practice. Okay, thank you so much, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, I think there was some network error. So I get 2 hand raises from two candidates, Himakshi and SK Atif. You can ask one by one. Good evening, ma'am. Yes. Ma'am, I have a couple of questions. My first question is, how many attempts are allowed in the AIB exam? You can reappear anytime if you want. You have to just get your AIB. Once you are registered with your state bar council, then you get 2 years to clear your AIB examination. Now, if you are not able to clear AIB within those 2 years, you have to re-register in your state bar, and then again you will be getting time to appear in AIB examination. So it is not attempt based, however, it is a time based. Okay, ma'am. My second question is, how soon I shall be receiving the certificate of practice after appearing the exam? Okay, so once you get your result of AIB examination, it will be displayed on the BCI website, and you can just download your result, and you can apply it in the State Bar Council with a COP form, and you will get the COP in say 2 to 2.5 months. It depends on State Bar Council how much time they take. So in the UP Bar Council, they take 2 months to give you a COP. Ma'am, if I am not satisfied with my AIB result, can I apply for re-evaluation? Okay, wait. In AIB examination, they never disclose the marks which they give to you. So they just provide you a result where it has been written either passed or result withheld. Okay, ma'am, my next question is that can you please throw a little bit of light on what is the registration process and what are the documents which will be required? In the State Bar Council? Ma'am, for appearing the AIB exam. Okay, in AIB, so AIB you will get the notification that AIB examination has been announced. It will be on the Bar Council of India website. You have to go through the link, and it will be a simple form which you are required to fill. You will be required to enter your state registration ID also. However, since they have introduced this new category of applicants, so if you are not having the registration with your state bar, then there is a separate portion where you can fill that I am the appearing student. If you are in your 10th semester, or if you have graduated, you can provide this. They provide you 3 categories, so you can either choose from any of the 3, and it will be sufficient. Then you have to provide your 10th, 12th, and graduation details and everything, Aadhaar, and that will be all. So once you are registered, you will be getting your admit card when the due date comes, and then you have to go to the examination center. Ma'am, do we have to give our original documents? See, for AIB examination, it is an online application-based examination, so you are not required to submit any original document. However, before that, you have to register with your state bar state bar council. And state bar council में register करने के लिए you are required to give your original documents with the photocopy. They will verify the original documents and they will return it back to you. It will not be submitted.
Okay, ma'am. Ma'am, can you tell me what was your experience while giving the AIB exam? Um, it was the easiest examination which I found because I had all the course material. matlab, I had my Bear Act set. Also, I forgot to tell you all that in the Bear Act, you are required to have the Bear Act with which is having no comments, notes, or anything apart from the Bear Act itself. So, Act with the illustration is only thing which is required. So the general Bear Act which we use, which have all the comments and important case laws notified there, they are not allowed in the AIB centers. And it is getting practiced since I think two or three AIBs, AIB 17, I think. So you have to purchase a new set of Bear apps. However, if you are not able to purchase or you not get the AIB sets without comment, then you can also download all your Bear apps from the website, the official website of Legislative Department, and you can get the PDF of it, and that will be allowed. Thank you, ma'am, for clearing all my doubts. Next question. Ma'am, hello, ma'am. This is Sutkirti. Ma'am, set Yes. of barracks we need to carry. उसका कोई एक ऐसे combined book नहीं आ सकता है, which is allowed. देखो कंबाइंड बुक तो नहीं आता है, बट जैसे लॉमैन और टैक्समैन और Okay. आई थिंक यूनिवर्सल के भी इनके सेट्स आते हैं, तो दे गिव यू AIB सेट जिसमें कि सारे Okay. इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स होते हैं बेस्ड अपॉन द सिलेबस. ओके एंड सॉफ्ट कॉपी आप जैसे बोल रहे हो तो सॉफ्ट कॉपी अलाउड नहीं मतलब मोबाइल तो अलाउड नहीं रहेंगे आई नहीं, गेस तो मोबाइल सॉफ्ट तो कॉपी भी ऑब्वियसली अलाउड. अलाउड नहीं है, तो आप उसको हाँ डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं. ओके 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 ठीक है थैंक यू सो मच मैम. Yes, hello, ma'am. यस. Actually, I wanted to ask that after qualifying this AIB examination, if we want to practice in another state apart from our home state, ओके. so we have to show that AIB this certificate for getting that license of that state, or we automatically can practice in that state with by showing this AIB certificate. See, once you clear your AIB examination and you will be getting the certificate of practice, it is valid all over India. So you are not required to show your license anywhere, or you are not required to re-register again in any other state. It is not required. However, say for example, you have already gotten yourself registered in the state of Uttar Pradesh, and you have mentioned also when you get your temporary license, you have to mention your place of practice कि usually आप कहाँ पर practice करेंगे. तो say for example you have said कि High Court of Allahabad, तो वहां पर लिखा होगा कि आपने High Court of Allahabad में practice करने की permission ली है. एंड ये इसलिए नेसेसरी होता है कि वहां से रिलेटेड जो मतलब जो उनका बार एसोसिएशन है, आपको उनकी मेंबरशिप लेनी होती है, सो दैट बार एसोसिएशन में वोट करने के राइट्स वगैरह आपको मिलेंगे, एंड देन दे यू विल बी ऑन द रोल ऑफ दैट बार एसोसिएशन. नाउ अगर आपको चेंज करना है कि नहीं अभी मैं स्टेट ऑफ यूपी में प्रैक्टिस नहीं करना है और नाउ आई वांट टू मूव टू दिल्ली फॉर एग्जांपल, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको यहाँ से अपनी इस बार एसोसिएशन की मेंबरशिप वहां वाले दिल्ली बार एसोसिएशन में शिफ्ट करानी रहेगी. तो री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है, बट अपने स्टेट बार काउंसिल को इंटीमेट करना होता है बस, और वहां पर एक फॉर्मेलिटी होती है, आपको बस वो कंप्लीट करना होगा. हाउ एवर मोस्टली आप एक जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके अलावा आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोर्ट में अगर आपका मैटर है, तो आपको वहां जाने से और प्रैक्टिस करने से कोई भी रोक नहीं सकता. फिर वहां के लिए अलग से कोई फॉर्मेलिटी नहीं लगती है. जैसे कि अगर आपका केस यहाँ पर चल रहा है, बट यू गॉट अ क्लाइंट जिसका केस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में, तो आप वहां पर भी जाके इजीली अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थैंक यू मैम. मैम और एक क्वेश्चन है कि जो लॉ ग्रेजुएट होता है मैम, उसको अपनी स्टेट की जो AIB के बगैर जो लाइसेंस मिलती है वो अपने होम स्टेट में मिलती है या जहाँ से वो डिग्री ये सिक्योर करता है जिस स्टेट से? ओके, तो जो लॉ स्टूडेंट है उसने AIB दिया और उसने AIB क्लियर कर लिया. अब क्लियर करने के बाद उसको लाइसेंस तुरंत ही नहीं मिल जाता है. ये प्रोविजन इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन मतलब वो अभी ग्रेजुएशन में है और AIB का एग्जामिनेशन आ गया, हाउएवर वो ग्रेजुएट होते हैं और उसके अगले 6 महीने तक कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया.
तो उनके टाइम को सेव करने के लिए ये प्रोविजन ऐड किया गया है। इससे ये बिल्कुल भी नहीं मतलब ये इंटेंशन नहीं है बार काउंसिल का कि किसी भी पर्सन को बिना स्टेट बार के ही वो प्रैक्टिस करने का अलाउंस देते हैं। तो जैसे ही आप एआईबी क्लियर कर अपीयर होते हो, उसके बाद दो चांसेस होते हैं, इधर आप उसको क्लियर करोगे या फिर आप उसको क्लियर नहीं करोगे। क्लियर नहीं करते हो देन कोई भी फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रीअपियर हो गए, दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट। अगर आप क्लियर कर लेते हो फिर वहां पर ना वेबसाइट पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन कि आपने एआईबी क्लियर कर लिया है, बट इट इज विद अंडरटेकिंग। विद अंडरटेकिंग का मतलब है कि आपने अंडरटेकिंग दिया है कि यू आर स्टिल इन योर फाइनल ईयर एंड यू हैव नॉट गॉट योर स्टेट बार एनरोलमेंट। तो जिस दिन आपका मतलब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, फिर आप अपना प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री के थ्रू स्टेट बार में इनरोल कराते हो। स्टेट बार का लाइसेंस फिर आपको वेबसाइट पे अपलोड करना होता है और फिर आपका एआईबी का वो सर्टिफिकेट ग्रांट होता है आपको। आई होप आई एम क्लियर। यस मैम, थैंक्स। ओके, मैम गुड यस इवनिंग। अजय, गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे कि अभी हम जैसे 3 ईयर लॉ कर रहे हैं, तो उसमें मैम अगर हम लास्ट सेमेस्टर में हैं तो एआईबी देना जरूरी होता है या फिर मैम उसके बाद भी दे सकते हैं? नहीं नहीं, जरूरी जैसा कुछ नहीं है, इट इज वॉलंटरली। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऐड ऑन किया गया है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये कंसर्न रेज किया था कि दे आर इन देयर फाइनल सेमेस्टर और अभी एआईबी का नोटिफिकेशन आ गया एंड दे डू नॉट वांट टू वेट फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो आपके पास बिल्कुल ही चांस है, आप चाहो तो अभी दो, 2 साल बाद दो, कभी भी दे सकते हैं। मैम डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होने के लिए विदाउट एआईबीई? उसके लिए एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट रहता है, बट हाउएवर कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स एंड प्रोविजनल डिग्री। प्रोविजनल नहीं, सॉरी, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री, अदरवाइज योर डिग्री। उसके अलावा आपका आधार कार्ड और एक इनरोलमेंट फॉर्म होता है वो फिल होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको एक कुछ और रिक्वायरमेंट एफिडेविट्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके स्टेट बार के नोटिफिकेशन में होगा, तो आपको उस अकॉर्डिंग उसमें अटैच करना पड़ेगा। अदरवाइज ये आपके बेसिक एजुकेशनल और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आधार और पैन, तो वो आपको अटैच करना रहेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय चैट बॉक्स, तो हम पहले उसको आंसर कर लेते हैं। ओके, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस हैं। How much time is sufficient for self-study for AIB? Okay. Now it depends on how you have studied in your 5 year or 3 year law course. तो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है देन यू विल बी रिक्वायरिंग लेस टाइम, क्योंकि फिर आपको रिवाइज करना होगा सिर्फ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने रहेंगे। एंड देन यू विल हैव योर बेयर एक्ट, जिसको कि आप इजिली समझ पाए होंगे क्योंकि आपने क्लास में अच्छे से पढ़ाई की है। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आप ऐसा है कि आप मतलब अभी आपको फ्रेश स्टार्ट करना है, देन अगर आप 2 से 3 घंटे रेगुलर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बट आई वुड से कि ये बहुत ही ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, आप किस लेवल ऑफ स्टडी पे हो अभी, और आपको कितना टाइम लगता है टू ग्रास्प द थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। बट आई वुड सजेस्ट कि जितना भी टाइम लो, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। तो अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो बट यू आर अ कंसिस्टेंट एस्पिरेंट, यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन एज कंपेयर टू द पर्सन जिसने कि 12-12 घंटे पढ़ाई की बट लास्ट के 1 महीने उसने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो टाइम इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, हाउएवर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज can we start preparing from second year? Of course you can start preparing from second year, but उसके लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सिर्फ अपने सेकेंड ईयर से ही लगातार सारे लॉ सब्जेक्ट्स को इजीली पढ़ रहे हो और फिर बहुत अच्छे से समझ रहे हो, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आप कायदे से क्लियर कर पा रहे हो, एंड आप अपने बेयर एक्ट को गो थ्रू कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो कि सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए कहीं से नोट्स पढ़ लिया और हो गया, एग्जामिनेशन पास कर गए। You are required to master your bare act to clear any law examination.
और यहाँ पर तो सबसे अच्छी बात ये है कि बेयर एक्ट आपको मिल जाएंगे खुद ही चेक करने के लिए। बट सपोज करो कि एआईबी में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपसे सेक्शन 400 समथिंग के बारे में बात कर रहा है ऑफ बीएनएस, तो आप सारे पन्ने स्क्रॉल करते करते फिर 482 पर पहुंचोगे और फिर आप बोलोगे कि अच्छा यहाँ पर ये प्रोविजन है कि नहीं है, या फिर कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और आप फैक्ट से ये क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ पर किस प्रोविजन की बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा समझने के लिए। इसीलिए मास्टर योर बेयर एक्ट, गो थ्रू योर बेयर एक्ट, प्रोविजन सारे इंपॉर्टेंटली, सारे इलस्ट्रेशन अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। रीजन बीइंग बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे आते हैं जो कि इलस्ट्रेशन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी स्टेट बार एग्जामिनेशन? नो, स्टेट बार में एनरोल करने के लिए एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री और रिजल्ट के साथ वहां जाना होता है और रजिस्ट्रेशन होता है आफ्टर पेइंग अ फी। हाउएवर ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जामिनेशन होता है एंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अपीयर, स्टेट बार में अपीयर नहीं करना होता है, स्टेट बार में बस रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया जितने भी अपकमिंग एआईबी एग्जामिनेशन होंगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप फाइनल ईयर में हो या फिर आपने स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तब भी आप उसमें एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ये 3 ऑप्शंस आपको फॉर्म में मिल जाएंगे कि आप फाइनल ईयर में हो, आपने स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपने स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, तो आप उन तीनों में से एक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। जब आप क्लियर कर लोगे एग्जामिनेशन, फिर आपको वो स्टेट बार में इनरोल करके वो वहां पर लगाना होगा, बार काउंसिल की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। उसके बाद ही आपको एआईबी का सर्टिफिकेट जनरेट होकर मिलेगा। जनरली एआईबी क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेट्स 1 ईयर में मिलते हैं। तो एआईबी के रिजल्ट के बेसिस पे आप अपना सीओपी अपने स्टेट बार से निकलवा सकते हैं, लेकिन एआईबी का जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट आता है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो आपको 1 ईयर के अराउंड मिलता है, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट का एज सच कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, हाउएवर वो एक सर्टिफिकेट है जो बता देगा कि हाँ सर्टिफिकेट मिल गया है आपको। व्हाट अबाउट जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स? ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, इज इट इम्पोर्टेंट टू क्लियर एआईबी एग्जामिनेशन फॉर प्रैक्टिसिंग एनीवेयर इन इंडिया? यस, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ही प्रोसेस है। एआईबी में सभी को अपीयर होना पड़ेगा। 10 सेमेस्टर एग्जाम अप्रैल 2025 में होगा, तो ऑब्वियसली 10 सेमेस्टर आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक, और अराउंड जुलाई अगस्त जो भी। तो अगर उसके बाद नोटिफिकेशन आता है देन यू कैन अपीयर फॉर एआईबी एग्जामिनेशन। रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं अराउंड 2 मंथ्स में। आफ्टर गिविंग एआईबी एग्जामिनेशन यू विल गेट योर रिजल्ट्स इन 2 to 3 मंथ्स आई थिंक, और रिजल्ट्स मिलने के बाद सीओपी भी 2 से 2.5 महीने में मिल जाती है। बट अगेन इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, तो स्टेट टू स्टेट बार ये टाइमलाइन डिफर करता है कि आपको सीओपी वो कितने दिनों में दे रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है कि मैंने एआईबी का प्रिपरेशन कैसे किया था। एआईबी के प्रिपरेशन के लिए व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपना ग्रेजुएशन का जो कोर्स था वो कायदे से रिवाइज किया एक बार, बेस्ड अपॉन द सिलेबस, कि जिन जिन सिलेबस से आ रहा है पोर्शन उसको एक बार रिवाइज कर लिया। बेयर एक्ट्स पढ़ लिए थे मैंने। हाँ, बेयर एक्ट्स तो मैंने ग्रेजुएशन में ही पढ़े हुए थे, तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी एआईबी के लिए। एंड ऑनेस्टली मैंने एआईबी के लिए अलग से कोई पढ़ाई नहीं की थी। रीजन बीइंग कि एआईबी के पहले मैंने कुछ एग्जामिनेशंस दिए थे, फॉर एग्जाम्पल एलएलएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ऑलमोस्ट मेरा लॉ का पोर्शन उसमें एकदम कवर हो गया था। हाउएवर बेयर एक्ट को कैसे नेविगेट करना है उसके लिए बेयर एक्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो विच आई डिड। और फिर मैंने पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे, तो पीवाईक्यूज इज इम्पोर्टेंट। फिफ्थ सेमेस्टर, इफ यू आर अ 3 year लॉ स्टूडेंट तो आपको फाइनल सेमेस्टर में होना होगा। आई विल शेयर यू विद यू ऑल इन दी ऑफिशियल, जो अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आई विल शेयर यू द एआईबी नोटिफिकेशन जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
AIB का सिलेबस आपको शेयर कर देंगे एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन अ डिटेल. So that will be then easier for you all to comprehend. Okay, regarding what type of questions are coming for this examination, I would say I would suggest you can join crash course of which is getting being offered by the Legal Vidhiya, क्योंकि 1 घंटे में सारे सब्जेक्ट्स बताना इट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हाउएवर क्वेश्चंस कैसे हैं, किस सब्जेक्ट से कौन से पोर्शन से आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्रैश कोर्स में क्लियर हो जाएंगी. तो यू कैन गेट इनटू इट. नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं. यस, क्रैश कोर्स में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, बट अगेन वेबिनार में आई कैन नॉट शेयर ऑल द नोट्स. ठीक है, बट आई विल शेयर यू ऑल द AIB का सिलेबस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड PYQs भी आपको मिल जाएंगे. सो आई थिंक मोर और लेस वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस. अगर किसी के पास इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क नाउ. मैम क्रैश कोर्स की फीस कितनी रहेगी फिर भी टेंटेटिव, एंड कितने मंथ्स का वो कोर्स रहेगा, मतलब कितने दिनों का रहेगा? आई थिंक इसके लिए आप एक बार लीगल विद्या की वेबसाइट पे चेक कर लो, और करण वुड बी बेटर टू आंसर दिस क्वेश्चन. मुझे आइडिया नहीं है. Okay. Here the question again. Sir, fees of the crash course and duration of the crash course. I will send on all the related details in the WhatsApp group. Okay, you are there in the WhatsApp group, right? Yes. Okay, I will send it there Okay. right after the session Okay. will end. Okay, sir. Okay. एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन और जितना भी हमने डिस्कस किया? हेलो मैम. यस मैम, अगर कोई स्टूडेंट ने यूसीजी नेट का एग्जाम दिया है और उसके Okay. बाद वो एआईबी का एग्जाम दे सकता है क्या? मतलब लिटिगेशन और एकेडमिक्स दोनों एक साथ कर सकते हैं? देखो, एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बट अगर जैसे आपकी PhD चल रही है देन यू कैन प्रैक्टिस. हाउएवर अगर आप एकेडमिक्स में कोई पोजीशन पे सर्व कर रहे हो विच इज अ परमानेंट पोजीशन, तो फिर आप एक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो. देन आपको वहां पर अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा. एग्जामिनेशन में बिल्कुल अपीयर कर सकते हैं. एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए यू आर नॉट रिक्वायर्ड कि आप किसी एक फील्ड में हो या आप सिर्फ स्टूडेंट हो. People who are serving as bank managers also, they also appear in AIB examinations. So I would share one anecdote जो मेरे साथ हुआ था. So when I was appearing for AIB, it was I think AIB 17. मेरे आगे जो कैंडिडेट थे, he was a bank manager serving in a Canara bank. And उनके प्रमोशनल पर्पस के लिए उन्होंने लॉ का एग्जाम दिया था, and he was appearing for AIB examination. तो AIB या फिर प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर कोई एज लिमिट नहीं है आपके पास. तो अगर आप किसी भी साइड में हो, यू कैन प्लीज स्विच ऑफ द माइक, जिसकी भी माइक है ये. ओके, so you can anytime you can just start your practice by getting yourself enrolled and appearing for AIB examination. मैम, आई हैव अनदर क्वेश्चन. मैम, आई एम 4th ईयर स्टूडेंट, तो मैं अब से एआईबी की प्रिपरेशन शुरू कर सकती हूँ क्या? मतलब अभी मैं एआईबी दे सकती हूँ? 4th ईयर हो, तो आप नेक्स्ट ईयर 5th ईयर में जब होगा तब आप दे सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो. तो बेटर होगा कि आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें. ओके मैम, थैंक यू. अभिषेक एंड श्रुतकीर्ति, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आपका हैंड रेज है अभी भी. Ma'am, do we have any specific kind of book for AIB or any course material to study? AIB की गाइड बुक्स आती है, बट अगेन आई वुड से कि किसी भी एक गाइड बुक से आप एग्जामिनेशन क्रैक करने की बजाय आप ये ट्राई कर सकते हो कि आप उनके PYQ सॉल्व करो और आप सिलेबस के स्पेसिफिक कोर्स मटेरियल पढ़ लो. दैट वुड बी इनफ. दैट आपने बताया ना PYQs, तो मैम ऐसा उसकी भी कोई बुक आती है मैम स्पेसिफिक?
अगर आपको कहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे कोई बुकलेट मिल रही है देन यू कैन गेट इट। इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू हमने पीवाईक्यूज मतलब एक्सेस किया था, तो आई कैन शेयर यू द लिंक्स जहाँ से कर सकते हैं। और आई थिंक लीगल विद्या के वेबसाइट पर भी आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। ओके मैम। ओके, लेंदी एक्ट्स के लिए रिगार्डिंग ए क्वेश्चन है, तो यस देयर आर, जैसा मैंने कहा सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इसलिए आई वाज सेइंग कि वी शुड हैव अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि जो लेंदी एक्ट्स है हम उन्हें अगर पूरा पढ़ने लग जाएंगे एंड देन वी विल गेट जस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इट, तो उससे, और हमें ये भी नहीं पता कि किस पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए ही हमें चाहिए कि हम कितना पढ़ें और कितना प्रिपेयर कर लें विच विल बी सफिशिएंट, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो और हम एफिशिएंटली उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर सके जिनसे हमारे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। मैम एआईबी एग्जाम की फीस कितनी होती है मैम, एनरोलमेंट फीस एआईबी एग्जाम के लिए? एआईबी एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन फीस 3500 रुपीज, जो फॉर्म की फीस होती है उसका ये चार्ज होता है। और स्टेट्स बार में रजिस्टर करने के लिए हर स्टेट का अलग अलग फी हुआ करता था, विच यूज टू बी वेरी हाई। हाउएवर अभी जो रिसेंट एक जजमेंट आया था, इट वाज गौरव कुमार वर्सेस, तो गौरव कुमार के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन कर दिया कि द मैक्सिमम अमाउंट विच कुड बी चार्ज फॉर एनरोलमेंट इन स्टेट बार काउंसिल शुड बी 750 रुपीज, तो इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल द बार काउंसिल्स इन इंडिया। तो स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव अ मिनिमम फीस टू बी पेड विच इज अराउंड 750 रुपीज। हाउएवर एआईबी एग्जामिनेशन का फॉर्म का फी इज 3500 रुपीज। Once a COP is issued, what should be the next step for a young lawyer just entering the profession? Okay. तो बिफोर योर COP is issued, अगर जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाते हो, then find a senior lawyer and start practicing under him, जिससे कि आप अपनी कोर्ट की बेसिक सीख लो। तो आई वुड नॉट से कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, बट अगेन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए यू शुड नो कि कोर्ट में काम कैसे होता है, ठीक है। प्रोसीजरल जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें लॉ कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती है, तो उससे इक्विप होने के लिए वंस यू आर ग्रेजुएट और इवन इफ यू आर इन ग्रेजुएशन, जैसे हम इंटर्नशिप्स तो हमें अलाउड होती हैं, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अंडर अ सीनियर लॉयर और आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। वंस यू थिंक कि आपके पास ऑल द प्रोसीजरल नॉलेज यू हैव गेन्ड ऑलरेडी, you know how to start and to finish a case, how to approach all the requirements, how to get things done in the court, then you can always start your independent legal practice. But for that build a client base first, और उसके लिए आपको networking जरूरी है, वो तभी आएगी when you are practicing under someone। तो आपको कोर्ट में ना इवन लॉ के प्रोफेशन में यू शुड बी विजिबल, जो दिखेगा वही अच्छा कुछ करेगा इज द की, क्योंकि अगर आप कहीं किसी को दिख ही नहीं रहे हो, लोग आपके बारे में जानते ही नहीं है, देन नो वन विल अप्रोच यू टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। तो उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए यू शुड फर्स्ट अपीयर, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो किसी के अंडर, उससे गाइडेंस लो, चीजें सीखो, और वंस यू आर इक्विप्ड विद एवरीथिंग यू स्टार्ट योर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। Okay, the next question is either to join a law firm or to prefer a senior advocate. That is quite subjective question. जैसा आपका इंटरेस्ट है आप वो करो। If you are more like a corporate person, then you should join a law firm. But if you want to struggle, but then you want to have your name, then फिर आपको senior advocate के अंदर करके और फिर अपनी independent practice start करो। Okay, so you all are asking about online courses, ठीक है। तो ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में ही हम बता रहे थे
you will get a course launched by Legal Vidhiya very shortly, and it will be a crash course, but it will deal with all the possible aspect of preparing for AIB examination. And there I will be delivering as what are the important topics subject wise, what is the preparation strategy. I will also throw some light on all the important topics, all the important maxims, every theoretical part, and then I'll tell you how to navigate the particular Bear Act, and आपको PYQ solve करने को मिलेंगे, and 1-to-1 question answer sessions will be there. So yes. I think this is all for today. और किसी के पास कोई questions है? Okay, then Karan, I hand over the platform to you now. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for such an insightful and engaging session. I'm sure everyone here has already started gaining valuable knowledge. To all our participants, thank you for your energy and focus today. Until then, stay curious, keep learning, and take care. Have a great evening. Thank you. Thank you. Have a Thank you, good day, ma'am. everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.